First, I want to tell you most important thing. Purpose of this live session is to connect as many as person on this earth, to bring unity among all nations. Unity should be in such a way that we should have common thought, that weapons, rifles, patent tank, bomb, nuclear bomb, missiles, if we are manufacturing them, it means we do not want unity. If we are using our revenue to manufacture all these weapons to slaughter human being, then we are not practicing unity. And what is the aim of this human form, where head is up, spine below, root is up, spine below? This is our structure. What is the teaching of greatest incarnation of to bring unity among all, unity among even bacteria, virus, unity with all plants, all atom molecules, all animals, all human beings. The greatest master till today what we realize is Lord Krishna. Same teaching was given to Lahiri Mahasaya. When Mahatar Baba was initiating Lahiri Mahasaya, he said very clearly, the teaching what I am giving to you, it was long before given by Krishna to Arjuna. And also, it is explained, it is the same teaching which was offered by all prophets of all ages and land. What is that teaching? If any structure where root is up and spine below, where root is up, spine below, this structure is having great quality. This structure can demonstrate complete freedom, that we can live without oxygen, we can live without atom, we can live without plants, without animals, without any support. That is called complete freedom. No other creation is able to demonstrate this complete freedom. Therefore, this structure is very important. Then you have to honor this structure. What is the first step how to honor it? Try to locate, try to visualize this structure with this concept. This structure is combination of all creations. In our human body, we have around 100, 10 raised to power 12. 10 raised to power 12 means 1, then you have 12, 0. So many cells we have in our body, and 10 times to this we have bacteria. 10 times to bacteria we have viruses. Without virus we cannot live. Then why you have planning to kill the virus? Without bacteria we cannot live. Then why you have thought of killing bacteria? What science technology is teaching, very good, but in that this is one thought, how to kill bacteria, how to kill virus. Therefore we want Indian philosophy. What is the Indian philosophy? To celebrate eternal unity. And with the master of eternal unity, that is called the Lord Krishna. If Mahatar Babaji, deathless incarnation, is giving this message to Yogata Lahiri Mahasaya, the teaching I am imparting to you, it was long before given by Krishna to Arjuna, long before same teaching was present with the Ikshvak, with the Ram, with the Prahlad, and with the Jesus. Same teaching was practiced by St. Paul, St. John. He explained it. And same teaching we are having it. After knowing this, you see this much cells we are having in the body. 10 times to this bacteria, 10 times to this we have virus. Now long before when I was telling you, our body is made up of viruses. When virus together they become bacteria. Bacteria, virus together become cell. All cells what we are having it. They do not have concept of killing anyone. Try to learn science of unity. How to experience science of unity, head to toes is this unique creation. Try to feel it
when you accept it, have this only one thought. Within this perception, all exist. All exist means all prophets of all ages and line, all creations present in 14 universes, which is visible and invisible, their past and their future, all exist within this even now, at this moment. Then what you have to do after this, pay highest respect and honor to your presence. If you do not pay highest respect and honor to your presence, you cannot pay respect and honor to others. But it is just, what is that? Oh, I am great, you are not great. I want to demonstrate. I am going to become ahead to you. I will defeat you. This is the education system. I want to have first division. I want to complete you. I will see that I am ahead you. This is not the teaching of human consciousness. Teaching of human consciousness is, I will be with you. If I am ahead, you will be ahead. Then who had this kind of prayer? How you can prove that this prayer was given by greatest prophet, Paramahansa Yogananda? He was incarnation of Lord Krishna, incarnation of Jesus. Therefore, this Paramahansa Yogananda, nobody knows that he is incarnation of Lord Krishna, Jesus, all. Therefore, this Lahiri Mahasaya already forecasted, this child will be like engine. It will take millions human beings to God. To God means to knowledge. What is the knowledge? And what was the knowledge? What is the holy science written? There is no atom. There is no mass. When you say heaviness, heaviness never exists. I am feeling tiredness. Tiredness never exists. I am feeling heat. Heat never exists. I am feeling cold. Cold never exists. I am feeling weight. Weight never exists. This knowledge was imparted by Samik Tesagiri, and I am very lucky he was my Guru and he is my Guru. I was having some ego. Why? Lahiri Mahasaya did not give me the teaching. And this ego was satisfied when I was in Canada. In 1 week, I got complete tuning with Lahiri Mahasaya. Then I started speaking English. And try to understand this. When I went to Canada, Hindu Mahasabha invited me. Then I thought, my Lord, I am going there. Hindu Mahasabha invited me. What is Hindu Mahasabha? From there somebody just put a bullet on the chest of Mahatma Gandhi. Oh my God, I am going there. But no problem. They are my friends. Then I was praying and praying. I want to spread scientific teaching of Kriya Yoga. I want to at least to meet scientists. Then my program was just shifted in all over the world. From the Yoga Fellowship Temple in Kitchener in Canada, I went to Boston. My program is started at University of Massachusetts. I met Professor Balram Singh. I was not knowing him. That when he met me, he was not coming to in my class. And he was thinking, I don't believe in a religion, in yoga, I don't believe in this. But his wife was coming in my class. She just gave message, oh, he's science student. He's teaching Kriya Yoga in the terms of science. Then he came. The first day he came, I don't know what happened. Some question answer was there. Then my class was 2 hours. I took the class half an hour. Then I said I will complete this session in evening class. Then I start just discussing with him. We sat 6 hours. Time passed away. I couldn't recognize time. Then every day we are sitting 6 hours, 5 hours, 4 hours, 7 hours. When he had not to go to university, we are sitting the whole day. And there was big talk. Now Professor Balram Singh has come. Now nobody can take time from Guruji. How it happens, when Luther Burbank, when Paramahansa Yogananda went to USA,
There was no any scientific person to whom he can converse his science. He met Luther Burbank. Luther Burbank was having great love for the plants and animals, like human science. What is similarity? Professor Balram Singh was the student of life science in JNU, which is the best university in India. And he did MPhil. Then he went to USA, he did PhD. To do PhD in chemistry is very tough. He took the subject chemistry to do PhD, but he scored 4 point. 4 point means 100%. Here 4 means in USA, there is no grading in that way. We say 100% score, he got it. Then he was able to work like a star professor there, and we met with him. Then I experienced some my consciousness when entered into Luther Burbank, and I felt that, oh, this is the same. Now it is confirmed that what I am teaching, it is a scientific technique. Then I used to teach first wave mechanics, thermodynamics, entropy, in university. Then through that I started speaking Kriya Yoga. Then there was great desire that we want Kriya Yoga department there. The center of Indic Center was opened there. I requested few persons. They donated good amount of money there. Then I become there. This department, I got a shield in that it is written director, founding director. You see, the person who had BSc and left medical, I became founding director there. But I was so much engrossed in USA, very difficult to leave it to come to India. Then God created a drama. After that drama, I left USA. I focused 1 or 2 places in USA, then Yoga Fellowship Temple in Kitchener. Everybody starts coming there. And I also engaged there too much, not having time for India. The God said, okay, all right, I am doing the next thing. Then Corona came. All flights cancelled. Going, coming business cancelled. Then I was sitting in the night. Then I said in my first lecture that this Corona came to make a big change in all over the world. Now political scenario will change. Now the public who is ignorant, not knowing, Mahatma Gandhi, who was one of the richest person in India, and he dedicated his all property to the public, and he lived with the nothing, only the piece of cloth and 1 stick and 1 watch, minimum belongings. That leader changed the British Empire in Africa, demonstrated. He went at the age of 22 in Africa. He made a big change there. He was thrown out of train because he was traveling the first class, and he made agitation there against British that you should honor each and every human being. This is the Christianity. In Bible it is written, you have to honor each and every person, that Christ exists within each and every person, but you are all unchristian. Then said, okay, all right. Gandhi, he was telling Gandhi, I will give the free pass, you can travel first class, no problem. You can walk on the pathway where we walk. Gandhi said, no, all has to be allowed. All should be free to travel in the first class, not only me. All persons should be allowed to walk on your pathway. Then decide no. Then he started some non-violence movement. At the last, British Empire became humble, accepted all demands of Mahatma Gandhi. This is the important thing, we should know it. Alone one Mahatma Gandhi changed the mind of all British who was ruling in South Africa. When Mahatma Gandhi came here, and no rich person supported, no the leader supported, they start having this thought, because any leader will not support other leader. Then Jinnah was telling, let him give some lecture 1 or 2, then he should sleep. This is India, this is not Africa.
The Mahatma Gandhi, he selected Champaran, uneducated area, no education. Then he demonstrated the villages of India who are poorest and having no education, they are ignorant. Those persons supported Mahatma Gandhi and big movement he started. He started teaching to the people of those areas how to live like a great human being, do not practice casteism, do not have hatred with the Christian, you have to practice love because Krishna said, I am present in the heart of all human beings. Then you should not criticize Christian. He taught the science of love to all the public of the Champaran. The big gathering came, then everybody just starts that British people have threatening. Now this person is going to throw away us. He was being arrested. Then all villagers of Champaran, they circled jail, surrounded. The judge was having great fear. Then he released Mahatma Gandhi. This you can see in the movie of Mahatma Gandhi. Then what I want to say, if one Mahatma Gandhi can make such big change, why we should not live his pathway? Okay, I cannot live, but I am going to contest election. I want to become MLA, member of Legislative Assembly, which is the members in the province, make a law. Then MP, member of Parliament. Why don't convince them? You have to live like Gandhiji. If you want to serve villagers, you have to serve a nation. Take an example of Gandhiji. Then they created such false story about Gandhiji so that there should not be demand from public about Gandhiji. Oh, Gandhi was sleeping nakedly with their knees. Why do not take any photograph? All photographs are present, but no photograph that Mahatma Gandhi was sleeping nudely with the granddaughters. This is a big bad publicity. Okay, all right, he's sleeping. How mother sleeps with the newborn baby? Mother will not feel that newborn baby, oh, I am mother, how can I be so close to my baby? Mahatma Gandhi's height was so high, you are not feeling any kind of difference between male and female. But he never slept like that. Because he was having one dress, because some dress is up to the here, what people imagine, why Mahatma Gandhi's thighs and calf muscle feet are open, and these knees who are 14 years, 13 years young, and just sleeping on the side of Mahatma Gandhi, as the children they sleep, I'm in between, Anu is here, Shriya is here. In that way, but there is no any photograph it can prove what they say. Big publicity was made like this. After that, all the big publicity that, oh, he likes Muslim more, he doesn't like Hindu. He likes scheduled caste more, he doesn't like forward class. All the big bad publicity was made. Oh, he was he's very clever person. Therefore, somebody say, you want to become president? Gandhi was telling. You want to become prime minister? You want to become father of nation? Completely false. He never said that I want to become father of nation. I want to get any position. He never said. And when they did not listen that, do not take freedom now, do not say the British to go away, because you have not learned the lessons how to live together. We have fight between Hindus and Muslims. Still we are having differences in the name of casteism. Let us ourselves make ready how to rule the nation. Therefore postpone 6 months. And nobody listened to him. Okay, all right, if you are not listening, okay, all right, but live together and get freedom. But we are having such a hatred with the Muslim because Jinnah, he was Hindu. Jinnah was Hindu from Gujarat. And we need money to work. Then he opened a business, fisheries.
He was selling the fishes to get the money. Then some Brahmins of the Hindu, they said, oh, he is not Hindi now because he is having the business of selling fish, the violence. Then he was keep away from this Hindu caste. You are not Hindu. Then he became Muslim. After being Muslim, he felt suffocation. He wanted to come back. I want to become Hindu, please accept me. I will not sell the fish. They said, no, you are permanently out. Then he took a revenge, I will divide India. One person who was not Muslim, never offered namaz, never entered into the mosque, decided I am going to divide India. And he did it. Nobody listened to Mahatma Gandhi. And Mahatma Gandhi said, do not divide India, make Jinnah Prime Minister. Then all leaders, they said, no, making them Prime Minister is civil war. Okay, all right, then we will divide nation. Never call any British person, but they call British person. The Gandhiji lost desire of living. And he said, God, no, I do not want to live further. Please send someone who can put bullet on my chest and I can prove I do not have hatred with that person. I do not have complaint with God. I should pronounce the name of God and live. And he did it. Then Godse was selected by God because he had many attempts to kill the Gandhi. On 20th January, there was a bombing over Gandhi. But bomb never touched the Gandhi. Wall was broken. He remained as such, unruffled. Then after that, what happens? Then everybody should have arrangement of security. All persons who are joining the prayer, police should check their bag, their pockets. No weapon should be there. Nothing was done. Then after 10 days, Godse came and put bullet on the chest. This is the story. Therefore, I am very fortunate, very lucky. I was knowing intuitively, Gandhi never said to Nehru, you become Prime Minister. Then Professor Balram Singh, he gave me the message. He read and he saw the article. He said it is the voice of Mahatma Gandhi. On 7th November 1947, after evening prayer, Gandhi used to give some message. And he was very angry on Jawaharlal Nehru. He said, Jawaharlal? He never said Pandit Jawaharlal Nehru. He was very angry. Jawaharlal, step down, resign. You are not fit to become Prime Minister. And Patel, he has become now like city people. He never loved now villagers. He is not fit to become Home Minister. Gandhi said this, but what is publicity? Gandhiji selected Nehruji to become Prime Minister. This big bad publicity created a big problem in India. The majority people who were in higher class, they start having some revenge with Mahatma Gandhi. Because of Mahatma Gandhi, India divided. Because of Mahatma Gandhi, Pandit Jawaharlal Nehru became Prime Minister. And it was a very luxurious life. But it is not true. He wanted some Prime Ministers to be from farmers. 90% population of India were living in the villages. He wanted somebody from village. When they will come, they will have more understanding how to help nation. But what bad publicity they have it. That he was sleeping nudely with the granddaughters. Why don't have any photograph till today? Through this live telecast, I am giving message to the all Indians. Do not criticize Gandhiji. Paramahansa Yogananda demonstrated he was in the highest stage of meditation. He fulfilled prophecy of Lahiri Mahasaya that he took 1,000, 100,000 people. He taught Kriya Yoga. Kriya Yoga is called practicing presence of God. And he demonstrated following Kriya Yoga means following path of truth and non-violence. He demonstrated. Now you are confused
because of my weight. Something happened, he took the all problems of the disciple on his body. He was not able to walk. But when he has to give interview, was having no any pain anywhere. Then all his students became little confused. Then Paramahansa Yogananda decided not to depart in 1949. But he has not completed his editing of Autobiography of Yogi. Then he edited in 51 again. He edited God Talks Arjuna, that book, Second Coming of Christ, about Bible. After that, 1952, he decided to leave. On 7th March 1952, just after giving brief message in front of the 50 countries' foreign diplomats, he departed with this message: Mahatma Gandhi, great prophet, brought a practical method for peace. Practical method, not imaginary. That should be followed by all nations. After that, he left body. And he said, "Oh India, I will be there." Because of his prophecy, this Kriya Yoga is expanding, able to work, because it is the will of Paramahansa Yogananda that he has to be in India. It means Kriya Yoga has to spread in India. So for in this life, I have to fulfill this mission. Kriya Yoga should reach to each home in India. Because when you practice Kriya Yoga, 100% guarantee, you will never have any hatred towards any caste, towards any person in the world. You will have perfect love with the bacteria and virus. Therefore, after meeting Professor Balram Singh, then I thought, okay, all right, I met Luther Burbank now. I have no problem. What I am teaching, he can prove this is scientific. Then some question arises in University of Massachusetts. Who is Yogi Satyam? How can he teach his classes here? What is his academic? My academic, only BSc. Zoology, botany, chemistry, I did graduation. Then I entered in medical. I left medical after 2 years. What was academic? Almost nothing. I cannot teach University of Massachusetts. But he convinced to the all. When he teaches, we get grant. And he brought very big grant to the University of Massachusetts. Then Indic Center was opened. Then I started teaching Kriya Yoga in University of Massachusetts. But God wanted me in India. Because of that, my teaching and other things, America gave me the highest visa, O1. O1 visa is called exceptional visa. I can become American citizen. If I don't have money, doesn't matter. But because of the God's planning, Lahiri Maharaj's planning, I have to be in India. Then I denied to become US citizen. Therefore, I am here. I am very fortunate you are with me. You are not a small person. You are very great. Your greatness brought you here. I can prove that. Just decide with me. Try to recognize your glory, that you are one with God. Will make a big change in India. That change will be in such a way, India will rise up with all nations of the world. Remember it. Poverty of India will disappear if people will practice Kriya Yoga. Sickness will disappear because through this practice, Lahiri Maharaj, my Gurudev, Tishtagiri, and my breath Paramahansa Yogananda and many other prophets, they wanted to demonstrate. Because in India, there is no scientist in my class. And they get fear that when this Kriya Yoga will spread, casteism will go. When Kriya Yoga will spread, the difference between Hindu and Muslim will disappear. Because of this visible effect, they were not supporting me in the way as it should be. Then God created a drama. So many others has got cancer. I sent him medical college. After biopsy, again diagnosed cancer. Then I gave him Kriya Yoga teaching. I gave him Kriya Yoga food. I increased his patience and tolerance. After 2 months again,
I wanted the surgery should be done because I was not in confidence that cancer will go. But I was having confidence after practicing it, his fear will go. Then I sent him for surgery, plastic surgery. Mohit Jain is a very great plastic surgeon of the medical college. Then he did plastic surgery. He took tissues of each and every part of the face, sent for diagnosis, no cancer cell. Then who did this help? My Gurudev, Swami Yukteswar. And he is the biggest disciple of Lahiri Mahasaya. Then in this help, Lahiri Mahasaya, Yukteswar Giri, Paramahansa Yogananda, Jesus Christ, Buddha, Lord Krishna, I appreciate all prophets. Now it has been proved that Kriya Yoga is able to solve all problems. Therefore I request all of you, practice sincerely with all devotion. I have requested Balaram Singh to come. You are thinking to come on 30th, I don't know, cancel it, come on 28th. He's coming on 28th to eat Bati Chokha. Then I will say, request him to 29th, he can share more his experiences with the Kriya Yoga. And you will listen, you will have confidence how it will heal you. Swami Shantanand, you do not know him. After just grade 12, he completed and he became MBBS student in this Lucknow, KGMC. He did MD. His father was surgeon. After intermediate, immediately, very difficult to enter into medical examination and get selected. And he did it. And he was born as a silver spoon boy, rich. After that, he became the doctor in the government hospital, Delhi, Safdarganj. After that, he gets some more specialization in England. He wanted to work in India. Because of the bribery in India, we are not thinking he cannot work here. Then he went to USA. He became very popular doctor there. If his friends come to visit him, they say, oh, he was very famous there. And he had a very luxurious life. Every day he was changing the dress. Wherever he was going over, nice, decorated. He looking handsome also. He's handsome, beautiful both. Because in practicing meditation, that person is male, female both. Therefore he is beautiful, female, he is a beautiful male, handsome. And he is sitting here, very closest to me. Person who can left all luxury life. A big house in the Florida, Atlantic Ocean, water was touching. I seen it. He was having one house in Washington, capital, USA. He sold all. Where got the money? Dedicated to this Kriya Yoga ashram. Then here you see, also many big persons are there. Linda ji, she looks just like my grandmother, but she is very young. My grandmother was old. She dedicated her everything to me. Who will do this in India? Therefore I put her name Maheshwari Mata. She is sitting here. Saraswati Mata. She was yoga teacher there and doing her business. She left, she is here. Meera Mata. She had a very good job in the Canada. She resigned and came. Adya Mata. She was in government job. She resigned and came. Swami Chakrapani. All he is my engineer, doing everything. I don't need money to purchase and he make everything what I want. Doors and tables and almiras, everything. He has all tools. He has open workshop. And one mental person who is there, Swami Bhavanand. He 24 hours as he doing editing. Who will do that 24 hours editing and making YouTube? Swami Bhavanand. I call him mental. One Durga Mata, she is from Jhansi Rani family, who fought for freedom in 1857. She is one of the richest person in the area of that UP. There's 300-400 acres they have. And we have got folk land donated from her father to the ashram. Cost is 65 lakhs rupees. And she and her brother had done PhD in human science. Both are here monk. Therefore, and one is from here, Gurgaon, Kriya Mata. She was in the past life in Bengal. She was a very high meditator. I will not tell the name. I want to make it little mystery. Therefore, in her young age, 16,
how she's engrossed in the Kriya Yoga, you can't imagine. When I observed her, she's having effect of the higher initiation. Therefore, she's here. And Amrita Mata, she is one example in my life. She has complete turned 180 degree her lifestyle. Nobody can do it. What lifestyle she was having in USA? Oh, my beard. They love so much, And her lifestyle is such that she has 180 degree turn demonstrated. Very important. Sarda Mata is not here. 15 years she was in lying position in Canada. She achieved the Gandhian walker powerful stage. But she was not listening to me. She fell down many times. She got fracture. Then she starts walking slowly. Again she started walking fast. I take the stick, then walk. Then she did it. The Shakti Mata already, she was with Paramahansa Yogananda. Very strong willpower. She is here. And one Yoga Mata, I put her Yoga Mata name to my daughter because first Yogananda met with Yoga Mata in Boston. She was arranging all the classes. Yoga Mata just connected Luther Burbank to Paramahansa Yogananda. Dr. Lewis. He was dentist. She connected Dr. Lewis to Paramahansa Yogananda. She arranged a program in Boston. But Boston was like Allahabad. Difficult to spread there. Then he selected Los Angeles. All persons who are here, they are extraordinarily great. I love them very much. Because of my love, I talk very hard to them. Because I learned from Iktisagiri, if you love very much, you should be very hard. As he was hard to Yogananda. You see in Autobiography of Yogi, Yogananda writes, when he was talking sometimes, I used to just like this. But I had to tolerate him. I want that he should change my ego. Therefore, if I am talking a little bit hard, not from inside, outside just to test you how you behave with me. This is the brief message for today, and I prophesize this. In my lifetime, India will change. How? With your help. Your means with the help of all human beings on this earth. With the help of animal kingdom, plant kingdom, atomic kingdom, energy kingdom, all are helping this movement. I have no enemy. Who are opposing me, they are helping me. When they oppose, my friends starts loving me more. I never have any opposition anywhere in the world. This is the ultimate truth. I am confessing it. Because of the opposition, this ashram is built. Otherwise, it would have been like sleepless Saint One Little Hermitage. It became big because of opposition. Therefore, I request all of you, do not have any negative idea who is opposing you. Try to honor and respect it. What Professor Balram Singh was telling, who was opposing me, was opposing him, he used to make chief guest in the function. Therefore, Professor Balram Singh, I am just uniting him in India movement. I called him today. He was thinking to come on 30th, but he will join 28th. He will leave here up to 30th evening or 31st. I will give him initiation again. I will devise for him. Then he will go. We are making a plan how to make a change. How to bring this spirituality on the platform of science. He is having time. He can roam university here and there. He is retired now. I do not have time to roam university after university. I have this fixed program. Anybody come here, I will help them to enter into deeper practice. आइए हम आपको एक बताते हैं बहुत स्पष्ट तरीके से क्रिया का साइंस जो आप सीख रहे हैं ये आध्यात्मिक विज्ञान है। आध्यात्मिक विज्ञान किसको कहते हैं? अध्यात्म का मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझिए। देखिए हम कहाँ से समझना शुरू करें? ग्रॉस रूट से। ग्रॉस रूट क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी पर क्या है? धूल धक्कड़, मिट्टी।
पानी, यही सब तो है। चलो यही से समझते हैं। तो ये है एटम मॉलिक्यूल। ठीक है, हमने ले लिया, एक पत्थर ले लिया, उसको मैंने खोजा तो पता चला कि एटम से मिलकर के बना है। ठीक है, एटम्स किससे मिलकर के बना है? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन, सो मेनी पार्टिकल्स, ये सब मिलकर के एटम बना है। ये किससे मिलकर के बना है? इसके ऊपर चार्जेज हैं जिसको इलेक्ट्रिक चार्जेस कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, मेसॉन, न्यूट्रॉन इस रूप में बन गया। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस किससे मिलकर के बना है? ये बना है मैग्नेटिक फील्ड से, जो चुंबकीय शक्ति होती है, मैग्नेटिक वाइब्रेशन। ओके, ऑल राइट। ये मैग्नेटिक वाइब्रेशन किससे बना है? इसको कहते हैं स्पिरिचुअल वाइब्रेशन। स्पिरिचुअल वाइब्रेशन, इसका स्पिरिचुअल वाइब्रेशन इज कॉल्ड द अल्टीमेट। स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से मैग्नेटिक वाइब्रेशन, इससे इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन, इससे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आदि, इससे एटम्स। तो स्पिरिचुअल साइंस का मतलब इसको पकड़ना। अगर आप स्पिरिचुअल वाइब्रेशन को पकड़ लिए तो आप मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकते हैं। कौन सा मैग्नेटिज्म हम चाहते हैं? प्रेम का। ऐसे मैग्नेट बनिए कि सबको पकड़ करके ईश्वर की तरफ ले चलिए। ईश्वर क्या होते हैं? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? अपनी हड्डी आप बना लीजिए, अपना फेफड़ा बना लीजिए, या हार्ट बना लीजिए, हाथ पैर बना लीजिए, आँख कान बना लीजिए, क्योंकि इसी के माध्यम से तो हम आपका दर्शन कर रहे हैं। तो इसको बनाने का ज्ञान तो बड़ी अच्छी बात है। बनाने के बाद सुरक्षा भी चाहिए, विष्णु का ज्ञान। अगर हमें परिवर्तन करना है तो वो भी ज्ञान चाहिए। हमें इस तरह से ज्ञान चाहिए। ठीक है, मिल गया ज्ञान। फिर अगर ये ज्ञान मिल गया तो हम एनर्जी वे बना सकते हैं। अभी बैठे सुस्त हैं, काम करना पड़ा, एकदम एक्टिव हो गए, दौड़ने लगे, काम खत्म हुआ, फिर एकदम सुस्त हो गए। जब चाहे सुस्त हो जाए, जब चाहे एक्टिव हो जाए। अच्छा तो फिर पकड़ लिए, एनर्जी हमारे कंट्रोल में, फिर आए एटम हमारे कंट्रोल में, जैसा चाहे वैसे बना लिए। तो स्पिरिचुअल साइंस का मतलब सब कुछ जान लेना। तो क्रिया का स्पिरिचुअल साइंस है। अगर आप क्रिया योग समझ लेते हैं, हर चीज समझ लेंगे। आप पेड़ बना सकते हैं, जानवर बना सकते हैं। अगर आप अपने को बना सकते हैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको नहीं दिखाई पड़ता। मैं बीमार पैदा हुआ, बचपन भर बीमार रहा। प्रोफेसर बलराम सिंह कहते हैं कि उनको जुकाम होता था बार बार। जब हमारे संपर्क में आए तो मैंने कहा कि कहते थे बॉस्टन में सुबह गर्मी, शाम को ठंडी, तो जुकाम हो जाता था। हमने कहा नहीं, जब ठंडा का आए, गर्मी आए, कहा ये वरुण देवता आप बहुत महान है, उस ठंडा को पकड़ लीजिए। ठंडक गर्मी को पकड़ना सीख लिए, जुकाम गायब हो गया। वो बता रहे थे कि नहीं? इस तरह से याद रखिए कि जब हम अपने को बना सकते हैं, इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन बना सकते हैं। और एग्जाम्पल है, जब मैं बचपन से बीमार पैदा हुआ, हमें डिप्थीरिया हुई, निमोनिया हुआ, इतना फोड़ा फोन से पूछिए नहीं। जब कोई देखे यहाँ एक फोड़ा निकला है, अगले दिन यहाँ निकला है, अगले दिन यहाँ निकला है। हमारा मुंह फोड़े का प्लेटफार्म था। आप पूछिए जो हमारे साथ पढ़े हैं। और जब देखिए रुमाल, गंगा जमुना लगातार बहती थी, इसे गंगा जमुना किनारे भगवान ने किया हमको। इतना जुकाम मैंने किसी को देखा ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन ऐसा होता था, पूछिए नहीं। गर्म पानी पी के आधा देर ऐसे वॉकिंग करूं, रेक्टम हिलाऊं तो बाथरूम हो। हमारी दुर्दशा आप जान रहे हैं ना। ट्रेन में जाऊं तो ऐसा एनिमा लेकर के जाऊं कि लेटे लेटे मैं ले लूं, लैट्रिन नहीं होती थी। वही मैं हूं। आंखों का चश्मा -20 डायोप्टर, चश्मा निकाल तो दिखता नहीं था, वही मैं हूं। लेकिन एक खास बात थी, हमको कभी बीमारी से हम परेशान नहीं हुए। कितनी भी असुविधाएं थी, हम उससे परेशान नहीं हुए। एक खास बात थी। और सेवा कार्य कभी बंद नहीं किए हम, ये भी खास बात थी। 2 खास बातें थी। इस समय देखिए, जिसका जन्म 22 मार्च और
1953 हो और इस समय आप हमें देख रहे हैं, जिससे उम्र बढ़ रही है और हम नए होते जा रहे हैं। 90 साल में कैसे होंगे और नए होंगे, तो आप क्यों नहीं होते नए? हम आपकी इतना प्रेम करते हैं, हम सिखा रहे हैं, क्यों बूढ़ा होना चाहते हैं? हमारे दांत यही थे, इतने गड़बड़ की कल्पना नहीं करेंगे। जब मैं कलकत्ता गया हैदराबाद से, उस्मानी यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पर जब क्रिया क्लास लेने लगा तो एक चाइनीज डॉक्टर थे, कह रहे थे आपके दांत बड़े गड़बड़। हम कहे हाँ है, तो ये जैसे हमारा ये नहीं पीला पीला, ये ऐसे हाथ दांत थे, बीच में कैलस था। कहते हम आपके दांत थोड़ा सा ठीक करना चाहते हैं। मैं गया उनके क्लिनिक में, तो 7 दिन लगाए दांत को साफ करने में। सोचिए कितने गड़बड़ थे। और कैविटीज थी मोलर्स में, अब कैविटीज गायब है, कुछ भी नहीं है। हर दांत से अखरोट तोड़ लेता हूँ, बादाम तोड़ लेता हूँ, खड़ी वाली। तो अगर हमारे दांत ऐसे हो सकते तो आपके क्यों नहीं होंगे? देखिए हम लिविंग एग्जाम्पल है ना। हम जहाँ पैदा हुए हैं 2 घंटे ही है रास्ता, जाके पूछ लीजिए। हम पैदा हुए ठाकुर के यहाँ, हमारा नाम पांडे है। वहाँ नाम पांडे क्यों पड़ा मालूम है? एक साथ बैठ लोग खाना खाते नहीं, जब कोई होता है भोज वगैरह, बड़ा अच्छा लगता था। एक साथ खाएं, एक साथ उठे। अब खाना खा के लोटा बैठे, उसको पानी यो करे, टुन टुन करें, हमको भी बड़ा अच्छा लगे, हम भी बैठे वैसे। कपड़ा निकाल के जनेऊ पहन के बैठते थे, हमारा नाम पांडे था। तो इस तरीके से हमारा बचपन आपको देखिए कैसे था। गाय की सेवा, बैल की सेवा, चाची की, चाचा की, सबकी इतनी सेवा करता था कि आपको कल्पना नहीं कर सकते हैं। 2-2 बजे रात तक से दबाता था। एक घटना बता रहे हैं, हमारे एक थे, उनका नाम था मोटकऊ बाबू, हम लोग बाबू कहते थे। बड़का बाबू, पलटनिया बाबू, मोटकऊ बाबू, मास्टर बाबू, हमारे गाँव में ही होता था। तो मोटकऊ बाबू आर्य समाज ही थे, उनका सत्संग होता था। हमारा क्रियायोग उनका आर्य समाज का, वो हार जाते थे। एक बात दौड़ा लिए हमको, तुम कल के लड़के बहुत ज्ञानी बने हो। तो हम भागे, फिर लौट के आए। हम कहे नहीं, आप ही ज्ञानी हैं। तो उनका मैं सिर दबाऊं, ये बात जनवरी का महीना था, इसको बताना जरूरी है। 2 बज गया, अब कहीं नहीं रहे, बंद करो। हम सोचे करें क्या है। अब मैं एक ड्रामा किया, गिरा खटपट खटपट। कहते का हो, गिर गया? हम कहे हाँ, नींद लागत रही ना, नींद लागत रही, गिर गए। तब भी नहीं कहे जाके सो जाओ बेटा, तभी हम दबाते रहे। हम कहे हम जाके सो ही जाते हैं। हम हार गए उस दिन, मैं सो गया। वही मैं हूं जो मैंने सेवा किया था ईश्वर को पाने के लिए, कि मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति से ही ईश्वर मिलेंगे। उसी भक्ति में गाय खिलाना, भैंस खिलाना, बैल खिलाना, पानी भरना, ये सब आज वही काम दे रहा हमें। और आप लोग घर में कहते बेटा तुम पढ़ते रहो, कोई काम मत करो। इससे बेटा आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे देखिए 2 बच्चे हैं ना, इनको सब सिखा रहे, झाड़ू पोछा लगाना, बर्तन साफ करना, ये करना, वो करना। आप देखिएगा कुछ साल के बाद इन दोनों, इस आपसे हम निवेदन करते हैं कि आपकी महानता बहुत अधिक है। आप महान हैं, सभी महान हैं, आप ही नहीं। परमहंस योगानंद लहरी महाशय को महाअवतार बाबा ने क्या कहा? ये कुछ डाउट रहा होगा, कुंभ मेले में आए थे, यहाँ सब कोई ऐसा संत है ही नहीं जो ज्ञानी हो। ये लोग तो फील कर लेते थे ना। अंत में देखिए वो महाअवतार बाबा किसी के यहाँ जो है पैर धो रहे हैं। कोई साधु जटा वाला है, तो वो तो जब चाहते थे तो उनको कोई पहचान लेगा। अरे गुरुदेव आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? कहन मैं इस साधु का पैर धो करके अभी इसका खाना बनाऊंगा, इसका बर्तन साफ करूंगा। इस तरह से विनम्रता को भगवान बहुत पसंद करते हैं। हम भगवान को खुश करने के लिए हम विनम्रता प्रकट कर रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि महाअवतार बाबा जी इनको शिक्षा दे रहे हैं। फिर उसके बाद वो गायब हो गए महाअवतार बाबा जी। तो याद रखिए, आप ज्ञानी अज्ञानी दोनों को प्रेम करिए। प्रेम करने का तरीका क्या है? अज्ञानी शराब पी रहे तो आप मत पीजिए। अज्ञानी स्मोकिंग करता था, आप न करिए। आप करेंगे तो छोड़ेगा नहीं। ज्ञानी तंबाकू बना खाता है ना अज्ञानी, तो आप न खाइए। आप खाएंगे तो नहीं छोड़ेगा। जो गलती करता है आप न करिए।
तो उसको इतना मानिए कि पूछिए नहीं। उसको जब प्रेम करेंगे और वो गलती हम नहीं करेंगे तो गलती करना छोड़ देगा वो। इसी नियम से भारत बनेगा ये, और दूसरे नियम से नहीं। इस नियम में रहिए, कोई FIR ही नहीं होगा, कोई मुकदमा ही नहीं होगा, नहीं दिन भर आप कचहरी में पड़े रहिए। वहाँ छुट्टी पे हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट सब जा नहीं पाएंगे, हाई कोर्ट भी सब नहीं जा पाते हैं। तो इस तरह से प्रेम करने में क्या दिक्कत है? आप चाहते नहीं कि शराब पीने लोगों को छूटे, आप उनकी निंदा न करिए, आप उनके बगल में रहिए, उनको न पीजिए आप शराब। वो गिर जाए तो उठाइए, प्रेम से चोट तो नहीं लगी। कल आप पिए थे ना, वो जिससे मजा आता था, आप गिर गए, हमको बड़ा कष्ट हुआ, हमने आपकी सेवा किया। आप थोड़ा धीरे से गिरिएगा, आज जोर से मत गिरिएगा, क्योंकि हम उठा नहीं पाते हैं, नहीं इतनी ताकत नहीं हाथों में। आप दिल से कहिए, वो छोड़ देगा वो। अगर किसी की निंदा करेंगे तो वो और गलती करेगा वो, क्योंकि निंदा करेंगे तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, उसको नेगेटिव सेंस होगा, तो और गलती करेगा तो देश कैसे बनेगा? इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आज से हम लोग संकल्प लें कि हम अज्ञानियों के साथ भी रहेंगे तो उनकी तरह नहीं रहेंगे, हम अपनी तरह रहेंगे। हमको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाए, कारण बड़े ज्ञानी हो, अज्ञानी है नहीं। हम भी वैसे पीते थे कभी, हम तो इतने पियक्कड़ थे कि पूछिए नहीं। ये मत बताइए कब पीते थे, किसी जन्म में पीते रहे होंगे ना, उनको डेट मत बताइए। आप इतने पीते थे कि आपको नहीं पता है। आप तो कच्ची मांस खा लेते थे। अभी कभी हम रहे होंगे ना शेर वगैरह, शेर कच्ची मांस खाता है कि नहीं? हम मरे हुए जानवर के मांस खा लेते थे, पता है? कभी रहे होंगे हम कुत्ता? इसको अंदर में रखिए, बताइए मत। और सही है ये। तो अगर कोई ऐसा करता हो, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हो, तो कही अरे हम इससे बड़ी गलती की है, आपको पता नहीं है, तो उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा, फिर आपकी चीजें सीखने लगेगा वो। इसी तरह से राष्ट्र बनेगा, याद रखिए। जो गलत किया जेल भेजने से राष्ट्र नहीं बनेगा, किसी को प्रताड़ित करने से राष्ट्र नहीं बनेगा। कोई गलती करे, पुलिस बुला लेंगे, उसको ले जाएगा थाने में, इससे राष्ट्र नहीं बनेगा। क्रिया ध्यान खूब करिए और दूसरे को प्रेम करना सीखिए, इससे राष्ट्र बनेगा। और हमारी आपकी जिम्मेदारी है, क्रियायोग हम आप कर रहे हैं, और जितने प्रकार की पूजा पद्धति है सब ठीक है, उसको बंद कर दीजिए तो यहाँ डकैती बढ़ जाएगी। जो गांजा पीते हैं अचानक बंद करा दीजिए तो वो डकैती डालेंगे वो। इसे जो नशा पानी करते, किसी को टोकना मत करिए, जो करते करने दीजिए, बस आप न करिए। आप उनके जब संपर्क में आएंगे और अंदर से उनको प्रेम करेंगे, उनकी हीन भावना खत्म करेंगे। अरे यार जो आप पीते हो, पता में तो इतने पीते थे, हम नाली में पड़े रहते थे 4-4 घंटा, हम तो मांस कच्ची खा लेते थे, हम तो कीड़े मकोड़े खाते थे, ये आपको पता नहीं है? तो ऐसा बताइए, उसको लगे सही बोल रहे हैं आप, तब देखिए उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाएगा। एक आदमी मीठा बहुत खाता था, हम तो मीठा के लस्ट है। भाई आप क्या खाते हैं? मैं 2 किलो खाया हूँ, और सच में मैं खाया था 2 किलो, आपसे बता रहा हूँ कैसे खाया था। जब मैं गया हॉस्टल में, BSc में था, तो जा रहा था घर, इसी TD कॉलेज से पढ़े हम, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी से है, तो वहाँ बेनी प्रसाद की मूर्ति है। तो हम सोचे 2-2 इमरती घर वालों को ले जाते हैं, तो ईमानदारी से 2 इमरती मैं खाया, 2-2 सबके लिए पैक किया। गए बस पर तो बस लेट, तो टेंशन हुआ तो 1 इमरती और खा लिया, क्योंकि हमारी दादी माँ बूढ़ी, उनको 1 ही चाहिए। फिर टेंशन हुआ, पता चला बस को 3 घंटा में पहुँच रहा है, सुबह से चले शाम तक पहुँची, तो बीच बीच में सब खाता गया। जब पहुँचे कादीपुर तो पूरी इमरती खा लिया था 2 किलो। तब मैं पेड़ा खरीद के ले गया घर पे, तो मैं कहा था 2 किलो इमरती खाया, तो ये नहीं बताता कैसे खाया हूँ, तो मजा ही खत्म हो जाएगा। आप क्या मिठाई खाते? मैंने 2 किलो खाया है। अच्छा, तब तो हम छोड़ सकते हैं। मतलब ऐसा बोलिए, ऐसा कहिए कि दूसरा आदमी का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाए, दूसरा जब अपनी निंदा करता है वो खत्म हो जाए। ऐसे बोलना है, याद रखिए। ऐसा मत बोलिए कि दूसरा अपने को छोटा समझने लगे, ऐसा कभी मत बोलिए। और क्रिया ध्यान कभी मत छोड़िए। अगर क्रिया ध्यान छोड़ दिए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, अपना रोटी दाल का इंतजाम भी नहीं कर पाएंगे, जो पैसा जुटाए वो भी खत्म हो जाएगा। बीमारी तो समझिए कि कितना
ये सोचिए कि इतनी कोशिकाएं हैं, इसका 10 गुना अपने अंदर बैक्टीरिया है और सबका 10 गुना अपने अंदर वायरस है। तो इसमें वायरस बैक्टीरिया कितना है मालूम है? वो तो हर क्षण इसी में है। कोरोना आ गया, किसी को छुओ मत, ये कौन सा रिसर्च है? पागलपन है। सारे वायरस कोरोना का अपने अंदर अभी भी है। सारी कैंसर सेल्स अपने अंदर है। जहां आपने घृणा शुरू किया वो बढ़ते हैं। वो जैसे जैसे घृणा बढ़ेगा यही वायरस बैक्टीरिया विकराल रूप लेते हैं, वो हम ही को डैमेज करने लगते हैं। तो ये जो फिगर है साइंटिफिक इन्वेंशन है, ये हम कल्पना से नहीं बता रहे हैं, ये रिसर्च हो चुका है कि इतनी कोशिकाएं हैं, इसका 10 गुना अपने अंदर बैक्टीरिया है और इसका 10 गुना अपने अंदर वायरस है। तो आप वायरस से क्यों डरते हैं? बस आप घृणा मत करिए, पहले अपने से घृणा बंद करिए। अरे हम ये काम नहीं कर सकते, अरे यार क्यों घृणा करते हैं अपने से? आप जो चाहें वो कर सकते, शुरू तो करिए। ये काम कठिन है फिर झूठ बोल रहे हैं, कोई काम कठिन हो ही नहीं सकता है, शुरू तो करिए। इस तरह से क्रिया योग करिए। आइए हम लोग संकल्प लें, हम आप मिलकर के इस देश को इतना अच्छा बनाएंगे ना कि पूरी दुनिया इसको फॉलो करेगी, पूरी दुनिया को लेकर आगे बढ़ेंगे, हम अकेले नहीं बढ़ेंगे। ये संकल्प है। तो कल 28 तारीख को भोज है अपने यहाँ। तो जो लोग 38 लोग नाम दिए थे, हम चाहते हैं इसके बाद उनके साथ हम मीटिंग करेंगे, कैसे खाना पीना खिलाएं, कैसे प्रेम से खिलाएं, आपको बताएंगे हम। प्रेम में नहीं होता, नहीं खा सकते तब भी ले लीजिए, और वहाँ उनके पास नहीं है, उनको नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको जानते नहीं। जिसको जानते उसके पास बार बार पहुँचेंगे, ये ले लीजिए वो ले लीजिए, और वहाँ पर कोने में उनको भी तो पूछिए। जैसे आप हमारे पास आते हैं, अरे ये भी ले लीजिए वो भी ले लीजिए, अरे हम तो ले ही लेंगे, बाकी जहाँ जिसको नहीं जानते उसको पूछा आपने? नहीं पूछा। तो कल हम कैसे सेवा करेंगे, हम आपसे प्राइवेट मीटिंग करना चाहते हैं। अभी इस बार अगली मीटिंग होगी शाम को क्लास के बाद, वहाँ पर इस बार ऐसा खाना खिलाया जाए कि उनकी माँ भी ना खिलाई हो। माँ कैसे खिलाती? ओवर ईटिंग कराती है। और माँ कैसे खिलाती है? अपने बच्चे को अच्छा देगी, दूसरे बच्चे का ख्याल नहीं करेगी। आप कैसे खिलाएंगे? सब स्वतंत्र होकर के बिना शर्म के अपने आप लेते रहेंगे। ऐसा प्रबंध हम लोग करेंगे, कोई चीज़ कम न पड़े और लोगों तक पहुँचे, और कोई ओवर ईटिंग न करे। पिछली बार क्या हुआ था मालूम है? जब भोज कराए थे, लोग झोला में भर भर के ले गए थे। घट जाए, कैसे घट रहा है पता, झोला भर के ले जा रहे हैं। इसका मतलब उनको ये नहीं पता भाई व्यवस्था की जाती है, इतने लोगों की आप भर के ले जाएंगे, तुरंत व्यवस्था नहीं हो पाएगी। इससे इस बार निवेदन है, वहाँ पर अनाउंस लिखवा देंगे हम कि आपका स्वागत है, आप प्रसाद ग्रहण करिए, लेकिन पिछले बार की तरह इसको भर भर के घर मत ले जाइएगा, क्योंकि व्यवस्था उस तरह से नहीं की गई भर के ले जाइए। अगर आप भर के ले जाना चाहते हैं तो हम गाड़ियाँ लगा दें, आपके घर वाले सब यहीं चले आए खा लें। हम टैक्सी कर लेते हैं 20 ठो, बुला लीजिए घर वाले यहीं खा लें। पता चला घर ले गए, नहीं खा पाए, सड़क पे फेंक दिए, हमें नहीं चाहते हैं। तो अगली बार यही करेंगे, इस बार तो नहीं। अगली बार 20 ठो टैक्सी रखेंगे और जिनको चाहते हैं घर ले जाएंगे, घर वाले को ही बुला लेंगे हम, या तो सबको साथ लाए। क्योंकि घर में जब ले जाते हैं तो खाने का अनादर करते हैं, टिफिन में ले जाते हैं छूटता है तो उसको पूरे खाने का अनादर करते हैं, फेंकते हैं, चिड़िया को देंगे। भारतीय संस्कृति है, चिड़िया को, कुत्ते को, गाय को हम पहले निकालते हैं, बाद में छूटा हुआ नहीं देते हैं। तो याद रखिए, उनको बड़ा प्रेम है तो पहले दीजिए। इस तरह से आज की मीटिंग हम लोग के निर्णय पर आएंगे। उसके पहले आइए हम आपको अभ्यास कराते हैं। आइए आपको 5 मिनट अभ्यास करा दें। हाउ टू लव आवर ओन सेल्फ। इफ वी डू नॉट लव आवर ओन सेल्फ, वी कैन नॉट लव अदर्स। I never found any mother who knows how to love herself. Therefore, she doesn't know how to love their children. अच्छी तरह से याद रखिए, हमने कोई भी माँ नहीं पाया जिसको प्रेम करना आता हो अपने बच्चों को। इसीलिए अपने बच्चों को प्रेम नहीं कर पाती, तो सभी बच्चों को प्रेम नहीं कर पाती है।
आइए अपने कैसे प्रेम करें, हम लोग अभ्यास करें. नाउ वी आर रेडी टू लव आवर ओन सेल्फ. देन सेम टेक्निक वी विल अप्लाई फॉर अदर्स. आंखें हम बंद कर लें. लेट अस क्लोज आवर आईज. आंखों को बंद करने के बाद दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. प्लेसिंग बोथ palm on the posterior surface of head. Feel head and spine and head to toes. This nearest of near creation head to toes is manifestations of the Supreme Creator, formless, omnipresence, Spirit is manifesting in this unique way. Head to toes changes within. This is the true for all creations. This visible universe, astral and causal universes. They are manifestations of omnipresence Spirit. Then we have to pay highest respect and honor to all creations. Within head to toes, all creations exist. Then feel it sincerely, and whatever we feel, accept it, presence of all in all. आंख बंद करके सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाई. ये स्वरूप जो अनुभव कर रहे हैं, जिसे हम निराकार परब्रह्म कहते हैं, वो स्वयं इस रूप में व्यक्त है, जिसकी अनुभूति महान है, पावन और पवित्र है. यही सच है सभी रचनाओं के लिए. तो दृश्य जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत, जो कुछ भी हम जानते हैं, जो कुछ हम कल्पना कर सकते हैं, निराकार परब्रह्म स्वयं सभी अस्तित्व के रूप में विराजमान है. तो फिर निश्चित हो गया कि हम सभी का सम्मान करें, इतना सम्मान करें, इतना आदर करें कि अनंत है. कैसे करें हम? सिर से पैर की उंगली तक इसी निकटतम अस्तित्व में सभी का दिव्य रूप विद्यमान है. भौतिक जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत की जितनी भी रचनाएं हैं, वो सब के सब सिर से पैर की उंगली तक इस रूप में विद्यमान है. अब हाथ को ऊपर उठाए, रेज आर्म्स अप. मुट्ठी बंद करें, खोलें. क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली. दोनों पैरों को सामने की तरफ फैलाएं. एक्सटेंड बोथ लेग्स इन फ्रंट. पैर की अंगुली से लेकर के हाथ की अंगुली तक सब में एकाग्रता बढ़ाएं. ट्राई टू फील ईच एंड एवरी पार्ट फ्रॉम tip of the nails of the toes to top of the head. Whatever we feel, pay highest respect and honor to this. What is the highest respect and honor? Head to toes, what we feel is presence of all kind of knowledge, all kind of power, eternal peace and bliss, and immortal consciousness. Within there exist all things. अब हाथ को मोड़ें और फैलाएं. फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स ऑल्टरनेटली. पैरों को मोड़े और फैलाएं. ट्राई टू फोल्ड एंड ओपन राइट एंड लेफ्ट लेग ऑल्टरनेटली. हेड टू टोज, व्हाट एवर वी फील, जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, इसी अनुभूति में सब कुछ विद्यमान है. ब्रह्मांड की सारी रचनाएं, इस अनुभूति का महत्व अनंत और असीम है. इसी भावना के साथ हम स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं. अब दोनों हाथ के सहारे हम दाहिना पैर, बायां पैर अच्छी तरह से पकड़ते हुए हम मोड़ेंगे, फैलाएंगे. विद द हेल्प ऑफ बोथ आर्म्स, ट्राई टू टच और राइट लेग, लेफ्ट लेग एंड बोथ लेग्स. ट्राई टू टच इट, प्रेस इट, फील इट एंड फोल्ड एंड ओपन ऑल्टरनेटली. जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं, इसी की महिमा अनंत और असीम है. Each and every perception we experience, its glory, its value is infinite.
फील हेड टू टोज मोर एंड मोर। सिर से पैर की उंगली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अब दोनों पैरों को हम बाहों के बीच में समेट लें। नाउ प्लेस बोथ लेग्स विद इन आर्म। इस स्थिति में जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं इसी की महिमा अनंत है, असीम है। इन दिस पोजिशन वट एवर वी फील, इट्स अ ग्लोरी, इट्स अ वैल्यू इज इन्फिनिट। We cannot speak about it. There is no language to express glory of the things we feel. अब ढीला करें। Now relax all parts. ढीलापन का महत्व, कड़ेपन का महत्व बराबर है। Value of relaxed state and opposite tightness both are equally great. फिर हम पैर को फैलाएं। अगेन एक्सटेंड बोथ लेग्स। हाथों को ऊपर करें। रेज आर्म्स अप। पैर की उंगली से हाथ की उंगली तक सब में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ हेड टू टोज मोर एंड मोर। अब 2 बार में गहरी श्वास के साथ हम इस तरह अंगड़ाई लें कि पैर की उंगली से हाथ की उंगली के नाखून तक हर जगह खिंचाव जो हो अच्छा लगे। मुंह से 2 बार में श्वास निकाल करके सब ढीला कर दें। प्रैक्टिस डबल ब्रीदिंग एंड हैव जॉयफुल स्ट्रेचिंग एवरीवेयर इन ऑल पार्ट्स। विद द डबल एक्सहेलेशन रिलैक्स ऑल पार्ट्स। जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं प्रत्येक अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है। ईच एंड एवरीथिंग वी फील, इट्स अ वैल्यू इज इन्फिनिट। अब हम सामान्य रूप में बैठे। सिट इन रेगुलर पोजीशन। आंख बंद रखते हुए माथे के सामने एकाग्र हो जाए। कीपिंग आईज क्लोज, प्लेस कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन स्पेस अराउंड फोरहेड। माथे के सामने जो कुछ भी हम देख रहे हैं, एक एक दृश्य चाहे जो भी हो, कभी कभी हम कहते हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है। काला, पीला, नीला कुछ तो दिखता ही होगा। जो भी दिख रहा है पूरा ब्रह्मांड इसी में समाहित है। द विजन वी ऑब्जर्व इन द स्पेस इन फ्रंट ऑफ फोरहेड व्हेन आईज आर क्लोज्ड, whatever we observe within that, there exists complete cosmos. Sometimes we have this thought, when we close our eyes we don't see anything, but this is not true. When we see black color, then we have this thought, we are not able to see anything because we have preconceived idea about some vision. Therefore, whatever we see, black color, blue color or any other things, within that there exist 14 universes. At the same time, observe breath. उसी समय श्वास अनुभव करें। प्रत्येक श्वास ये है क्या जो अंदर की तरफ प्रवेश होता है और बाहर की तरफ निकलता है, जिसे हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन कहते हैं, यह है क्या? प्रत्येक श्वास में पूरा ब्रह्मांड है। तो श्वास का इतना सम्मान करें कि हम किसी भी श्वास को भूलेंगे नहीं। When we observe breath, what is this? Something is going inside and coming outside. We have named inhalation, exhalation. What is this inhalation, exhalation? Each and every breath is unique
and is a storehouse of all creations of cosmos. Wonderful miracle. Now look at head and spine. What is this head and spine? This is the place within head to toes. And we learn how to pay attention, concentration, awareness to experience head and spine. Then we realize in one lifetime we can cover the time of 1,000,000 years. In one lifetime we learn how to create a human structure, how to create plant kingdom, animal kingdom, how to create solar system, galaxies. Therefore, head and spine is called altar of God. सिर और रीढ़ है क्या? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. सिर से पैर की अंगुली तक सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाए. इसमें जब हमारी एकाग्रता 100% हो जाती है तो पता चलता है कि हमें वो ज्ञान मिल गया कि हम सब कुछ बना सकते हैं. मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सौरमंडल, तारामंडल, सब कुछ. इसलिए सिर और रीढ़ को परमात्मा की वेदी कहते हैं. We have named head and spine as an altar of God. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें. Place both palm on the posterior surface of head. Let us feel altar of God as never before. आइए परमात्मा की इस वेदी को ऐसा अनुभव करें जो अद्वितीय हो. इतना अच्छी तरह से अनुभूति अभी कभी न किए हो. तो याद रखिए कि सिर और रीढ़ के अंदर विद्यमान है 14 भुवन. जितने पैगंबर हैं, जितने अवतार हैं, सबका दर्शन पहले इसी में होता है. संपूर्ण ज्ञान, शक्ति, शांति, तत्व, परम आनंद, सब की अनुभूति पहले इसी के अंदर होती है. विद इन हेड एंड स्पाइन, फर्स्ट वी विल हैव प्रेजेंस ऑफ ऑल प्रॉफिट्स ऑफ ऑल एजेस एंड लैंड, presence of all kind of knowledge, power, eternal peace and bliss. We are very, very fortunate. We are able to experience presence of head and spine. Now curve it slowly to experience the head and spine more and more. When we are curving head and spine slowly, try to observe it, feel it. Whatever changes we feel, value of each and every change is highest, best. We cannot explain it. We do not have language to write and explain the glory of each and every change we feel when we are curving head and spine towards right, left, backward, forward. दोनों हथेली को सिर के पीछे रखे हुए सिर और रीढ़ को धीरे धीरे हम दाहिनी तरफ, बाईं तरफ, फिर पीछे की तरफ, आगे की तरफ झुकाएं. इस तरह से झुकाएं कि झुकाने की क्रिया अच्छी लगे. और ऐसा करने में जो कुछ हमें अनुभव होता है, एक एक परिवर्तन का महत्व अनंत और असीम है. इसी भावना, विचार और धारणा के साथ सिर और रीढ़ में एकाग्रता बढ़ाते जाएं. Now we have true idea, true thought and true concept behind this unique presence, head and spine. Head and spine is called altar of all knowledge, power, peace, bliss and immortality, and is altar where we will observe presence of all prophets of all ages and land. सिर और रीढ़ वो वेदी है
जहां पर सर्वप्रथम हम दर्शन करते हैं संपूर्ण ज्ञान का, शक्ति का, शांति तत्व का, अमर तत्व का, सभी प्रॉफिट का, सभी अवतार का, पूरे ब्रह्मांड का प्रथम दर्शन सिर और रीढ़ में होता है। फिर हाथों को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप, फिर मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट, ओपन पाम ऑल्टरनेटली, हाथों को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन, हाथों को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स। अब हाथ के अंगूठे के माध्यम से हम कान बंद करके अनुभव करें क्या अनुभव होता है। जब कान बंद करते हैं उसी समय आंख भी बंद रहती है, सिर ऊपर रीढ़ नीचे, कंधा थोड़ा पीछे, पेट थोड़ा अंदर। In this position, head up, spine below, shoulder joint backward, chin parallel to the ground, abdominal area little inside. When ears are closed, then we observe various sound waves. Within each and every sound wave, there exists knowledge of all kinds, power of all kinds. हम इसी मुद्रा में इसी तरह से बैठ करके जब हम कान बंद करके हम ऑब्जर्व करते हैं तो अनेक प्रकार की सूक्ष्म ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। प्रत्येक ध्वनि तरंग में सब कुछ विद्यमान है। संपूर्ण ज्ञान और शक्ति, परम शांति, आनंद तत्व, सब कुछ। आइए हम कान बंद करके 2 मिनट तक उन्हीं ध्वनि तरंगों के अंदर डूब जाए। Let us immerse our existence within the sound vibration we are going to listen here when ears are closed. अब हम हाथ ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप। 2 बार में श्वास से प्रश्वास के साथ हम अंगड़ाई लें, रेज आर्म्स अप, प्रैक्टिस डाउन ब्रीदिंग followed by stretching relaxation. Let us bow down to our devotion. We have in Kriya meditation, क्रिया योग में अपनी भक्ति को व्यक्त करें। बैठेंगे, now we will sit, open eyes.